Hello everyone, once again welcome back to Vyapar Jagat TV and we are talking to green entrepreneurs, environment experts and ऐसे leaders जो ये world को बेहतर बनाने का काम करते हैं and so ये particular जो green talk show which is India's first green talk show जो हम चला रहे हैं जिसका नाम है AGROTIS presents talk with Greenpreneur and I welcome you all for this particular talk show एंड सो कुछ चीज़ें जहाँ पे जैसे हमें एक एक लीडर एक एंटरप्रेन्योर उनकी जर्नी उनकी लाइफ उनको सुनना उनकी लाइफ की चैलेंजेस जो है उसमें से सीखना वो हमारा एक एक रूटीन रहा है एज एन एंटरप्रेन्योर एज एन प्रोफेशनल तो हम काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो सीखते हैं दूसरे के एक्सपीरियंस से ताकि हमारा हमारा जो है एक लर्निंग जो है वो एक फास्ट लर्निंग बना रहे तो वैसे ही आज हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर असीम एंड सो डॉक्टर वेलकम टू व्यापार जगत टीवी एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस पर्टिकुलर टॉक शो Thank you so much, Parmarji. Thank you. Okay, It's a great so pleasure to be here. my pleasure, ma'am. Thank you so much. And so, Dr. Aseem is an environment expert. She is a woman leader, an entrepreneur, as well as she is an author. And Dr. Aseem has doctorate in urban landscaping, and she is working since 22 years. So she is having a wide experience. She is a consultant for most of the municipal corporations in Maharashtra, and she is she used to the biker, and she is having her name in the Guinness Book of Records for for that particular biking, her hobby. And so we are having Dr. Aseem and डॉक्टर वंस अगेन वेलकम टू व्यापार जगत टीवी एंड डॉक्टर आपकी जर्नी के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं एंड सो वी वांट टू स्टार्ट विथ योर बैकग्राउंड तो ये बताइए कि व्हाट इज़ योर एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड हाउ इट वाज ऑल स्टार्टेड कैसे आपने स्टार्ट किया तो एक्चुअली मैं साउथ बॉम्बे की लड़की हूँ जय हिंद कॉलेज से मैंने अपना 12th किया और उसके बाद पापा का एक छोटा सा फार्म था और जब से हम अ, बॉम्बे में रहने वाले लोग जब किसी फार्म के बारे में सोचते हैं तो मैं इतने साल पहले की बात कर रही हूँ तो नॉर्मली जैसे छोटे बच्चे ड्राइंग कर निकालते हैं ना पहाड़ बनाते हैं छोटी सी नदी बनाते हैं एक छोटा सा घर और एक पेड़ तो ऐसी वो लैंड थी तो वहां पे एक्सेस रोड बिल्कुल नहीं था बिल्कुल मतलब आदिवासी लोगों के बीच में जवार मुखड़ा का अगर आपने नाम सुना है तो उस एरिया में थी ये जगह और वहां पे कुछ भी नहीं था मतलब जब हमने वो जगह खरीदी तब जो ट्रीज थे वो सारे ट्रीज भी वो लोग काट के लेके जा रहे थे क्योंकि उनको लग रहा था कि इसका फायरवुड बनेगा ये मैं करीबन मोर देन 40-45 ईयर्स 40 ईयर्स के पहले की बात कर रही हूँ और उस टाइम पे ऐसा था कि वहां पे जितने प्लांटेशन किए वो सारे के सारे हमने खुद किए क्योंकि इतनी गर्मी थी वहां पे पानी नहीं था और मतलब जमीन जैसे हम मूवीज में देखते हैं कि वो क्रैक्स है उस तरह की वो जमीन थी और 4 महुआ के पेड़ थे जो पापा ने पैसे दे के खरीद लिए थे भाई इनको तो मत काटो हमको कुछ तो छाया रहने दो बैठने के लिए लेकिन उस टाइम मैं बहुत छोटी थी स्कूल में थी और आई मस्ट बी ओनली सम 5-6 ईयर्स ओल्ड लेकिन मेरी जर्नी मेरे ख्याल से वहीं से शुरू हो गई क्योंकि मैं जब भी पापा बहुत बिजी रहते थे और उनसे बात करने के लिए उनके साथ फार्म पे जाना उसी टाइम पे हमको पापा मिलते थे तो एक हमने वहां देखा कि जिस तरह से वहां के लोग रहते हैं और जिस तरह हमने वहां पे मतलब अगर हाल ही में आप देखेंगे तो जिस जमीन पे सिर्फ एक जमाने में 4 ट्रीज थे आज वहां पे 125 मैंगो ट्रीज 425 मैंगो ट्रीज 125 चीकू ट्रीज मोर देन 100 कोकोनट्स और कई सारे दूसरे पेड़ आज उगे हैं वहां पे और मतलब ये जो ट्रांसफॉर्मेशन मैंने अपनी आंखों से देखा एज अ चाइल्ड आई सॉ दिस अपनी आंखों से और बहुत सी चीजें मैंने उन आदिवासियों से सीखी इनफैक्ट मेरी शादी के बाद मैं और मेरे हस्बैंड ने सोचा था कि एज अ सोशल एंटरप्रेन्योर वी गो एंड लिव देयर और हमने हमारा मुंबई का घर भी बेच दिया बिकॉज वी वांटेड टू गो देयर वी लिव देयर एंड डू समथिंग फॉर दोस पीपल उस दरमियान मोर देन वी टीचिंग देम आई थिंक वी लर्न फ्रॉम देम कि उतने कठिन परिस्थिति में कैसे रहना है एंड दे आर सो गुड एट अंडरस्टैंडिंग एनवायरमेंट मतलब उनके पास उस एनवायरमेंट ही है सिर्फ और कुछ नहीं बट स्टिल दे आर सो प्रोटेक्टिव वो इतने अच्छे से प्रोटेक्ट करते हैं
तो तब जब से पानी नहीं था, तो पानी प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करना चाहिए, अगर किसी को कुछ लगता तो कोई भी जड़ी बूटी उठा के हम कैसे उसको क्योर कर सकते हैं। तो मुझे लगता है जो मेरा जर्नी जो शुरू हो गया, मेरी जो जर्नी शुरू हो गई वो बेसिकली वहां से शुरू हो गई। और फिर एक जय हिंद जैसे कॉलेज में पढ़ने वाली लड़की हॉर्टिकल्चर के लिए गई, और मैंने बीएससी हॉर्टिकल्चर में कर लिया, मास्टर्स भी कर लिया, और उसके बाद आई वेंट ऑन टू डू माय पीएचडी इन अर्बन लैंडस्केपिंग। तो ये जो मेरा ट्रांसफॉर्मेशन था, क्योंकि मुझे एक पर्पस था कि हाँ मुझे इसी में कुछ करना है, क्योंकि जब मैं वापस बम्बई आई तब मैंने देखा कि यहाँ पे किसी को कुछ भी उसका वैल्यू नहीं है या लोग जानते नहीं है। और मेरे जो फ्रेंड्स यहाँ आईटी कंपनी में काम करते थे, सैटरडे संडे मेरे वहाँ आते थे, तो दे वर सो थ्रिल्ड, उनको इतना अच्छा लगता था वहाँ वो सब्जी जो उगती थी उसको प्लग करके खाना, पानी नहर रहती थी उसमें जाके अपने पैर डुबाना, और वो एसी में काम करते थे और बोलते थे असीम हम थक जाते हैं, और हमें बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे, यू आर लिविंग लाइफ, वी आर नॉट लिविंग, वी आर स्लेव्स ऑफ अवर वर्क। और तब मुझे लगता था कि अरे इनको यहाँ पे क्या अच्छा लग रहा है, जबकि वहां पे वी आर लिविंग अंडर द मोस्ट हार्डशिप्स। आप यकीन नहीं करोगे, आई हैव बीन बिट बाय स्कॉर्पियो, बाय स्नेक्स, क्योंकि उस जगह में रहना इतना इजी नहीं था, हाउएवर रोमांटिक एंड नाइस it was very tough, and especially for a city bred person to go back to that area or settle down, but एक अजीब सी खुशी थी, और बहुत कुछ सीखने मिला, अच्छा लगा। और आई थिंक दैट इज एक्चुअली व्हाट मोटिवेटेड मी, कि जब हम वापस बॉम्बे आ गए तब मुझे पहले ये लगा कि कैन आई क्रिएट दैट इम्पैक्ट इन द लाइव्स ऑफ द पीपल, कि क्या हम वो छोटा सा चेंज यहाँ ला सकते हैं। इट रियली डजंट टेक मच, इट्स जस्ट योर माइंडसेट। तो आई थिंक दिस वाज माय बेसिक रीजन एज टू मैं इस फील्ड में क्यों आई। एंड आई थिंक आई वाज वेरी फॉर्चुनेट, बहुत लकी थी मैं, बिकॉज आई डिड सम वेरी अमेजिंग प्रोजेक्ट्स and one of its kinds. Like I did Asia's largest automobile factory, which is 617 people. I did the first interactive children traffic training park in India. I went on to do Shivneri Fort, Nahargarh Fort, Ram Nivas Bagh. मतलब ये ऐसे प्रोजेक्ट्स, पवई लेक, जो रिपीट नहीं होते, सो आई वाज वेरी फॉर्चुनेट, क्योंकि मेरे ख्याल से मेरी जो पैशन थी मैं उस तरह से इसमें जुड़ गई। मतलब आई एम मैड टू बी वेरी फ्रैंक, और उस पागलपन ने आई थिंक मुझे एक नई दिशा दी, एंड आई रियली एंजॉय। मैं अपने बच्चों को, छोटे बच्चों को भी मेरे साथ लेके जाती थी। आज जब मैं उनकी फोटोग्राफ्स देखती हूँ कि कोई जेसीबी में बैठा है, कोई किसी ट्रक पे चढ़ा है, एज अ किड, बिकॉज उनकी मम्मी ऐसे फील्ड में थी, तो दे यूज्ड टू जस्ट बी हैंगिंग अराउंड, but I think they enjoy all that, and they have now inherently become individuals who support environment. मुझे सिखाना नहीं पड़ा उनको, so that was my main motivation. सुपर सुपर। एंड डॉक्टर, जो आप अभी ये जो भी आप एजेंसी चला रहे हो, उसमें वी वांट टू नो मोर अबाउट योर एजेंसी की क्या सर्विसेज आप ऑफर करते हो, और व्हाट इज द रीजन और टेरिटरी, ये सर्विसेज जो आप देते हो, मतलब विद इन महाराष्ट्र या मुंबई में ही काम करते हो, या यू वर्क इन मोर प्लेसेस एज वेल? नो एक्चुअली बात ऐसी हुई कि जब मैं वापस आई यहाँ मुंबई में, तो एवरीबडी थॉट कि पढ़ी लिखी मालन है, बस उससे ज्यादा किसी को इसका कोई वैल्यू नहीं था। तो सबसे पहले मुझे लगा कि लोगों को बताना बहुत जरूरी है कि हम क्या करते हैं, या हाउ टू एजुकेट पीपल टू अप्रिशिएट नेचर अराउंड अस। लोग जनरली बोलते हैं छुट्टियों में बाहर जाते हैं, सिटी ब्रेड है, लेकिन सिटी के बाहर जाएंगे हम बोलेंगे बहुत अच्छा एनवायरनमेंट था, बहुत अच्छे जंगलों में गए या बहुत अच्छे रिजॉर्ट में गए, लेकिन हम हमारे आसपास की जो ये ग्रीनरी है उसको नोटिस करना भूल जाते हैं। हम ये नहीं देखते कि वो ग्रीनरी भी कितनी सुंदर होती है अलग अलग सीजन्स में, और वो सारी चीजें हम देखते नहीं है। वो ही पेड़ हमको बाहर दिखता है तो वी स्टार्ट अप्रिशिएटिंग दैट। सो आई थॉट कि सबसे पहले एजुकेशन इज इम्पोर्टेंट, तो आई स्टार्टेड राइटिंग इन न्यूज़पेपर्स। मेरे करीबन 300 से ऊपर आर्टिकल संडे ऑब्जर्वर, डेक्कन क्रॉनिकल, टाइम्स ऑफ इंडिया, मिड डे, इंडियन एक्सप्रेस, ऐसे कुछ न्यूज़पेपर्स में छपे, जिसमें मेरी कॉलम रहती थी, एवरी वीक की कॉलम रहती थी मेरी। और उसके बाद छोटी सी हमारी प्लांट की नर्सरी थी। धीरे धीरे ऐसा हुआ कि मैं इन सर्कलों में घूमने लगी, तो मुझे अभी भी याद है, मैं शायद मेरी मास्टर्स कर रही थी और मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली, हाजी अली का रेस्टोरेशन कर रहे थे, और सुपरिटेंडेंट ऑफ गार्डन्स जो थे उन्होंने मुझे कहा कि असीम एक बार आके डिप्टी म्युनिसिपल आर्किटेक्ट को मिल लो। जब मैं वहाँ उनको मिली तब फॉर द फर्स्ट टाइम आई रियलाइज द वैल्यू दे हैड इन माय सजेशंस,
तब जियो फैब्रिक्स वगैरह यूज करने थे। आई एम टॉकिंग अबाउट आई थिंक 2008 और समथिंग लाइक दैट। तो तब उनको लगा कि हाँ शी कैन मेक अ डिफरेंस, और दैट वाज माय फर्स्ट प्रोजेक्ट वेयर आई वर्कड एज अ कंसल्टेंट विद अनदर प्रिंसिपल आर्किटेक्ट, क्योंकि तब मैं आई वाज स्टिल वेरी यंग एंड आई डिडंट नो व्हाट आई वाज गेटिंग इनटू। उसके बाद looking at my work, I got empanelled in the Bombay Municipal Corporation and I worked on one of my most amazing projects, that is the National Textile Museum, which was conversion of a mill into a textile museum. एंड तब जो राजीव करके यहाँ के म्यूनसिपल एडिशनल म्यूनसिपल कमिश्नर थे, उन्होंने वो मतलब काफी मुझे उन्होंने मोटिवेट किया था काफी। दे यूज्ड टू टेल मी दैट यस यू आर डूइंग अ गुड जॉब, कैरी दिस जॉब ऑन। एंड उसके बाद ऐसा हुआ कि इट वाज ओनली वर्ड ऑफ माउथ। एक म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन से पुणे में काम करने लगी, पुणे से लेके फिर नासिक में काम करने लगी। आई स्टार्टेड इस दरम्यान में पीएचडी कर रही थी, तो आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क इन लैंडस्केप पे कोर्स चल रहा था एचटीसी हॉर्टिकल्चर ट्रेनिंग सेंटर तलेगांव में। तो वहां पे आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू गो एंड एजुकेट सम पीपल हु हैड कम फ्रॉम कश्मीर। आगे चल के आप बिलीव नहीं करोगे, 10-12 साल के बाद these people remembered me and 2017 I won the global competition to design the first citizen park of Srinagar at Buffalo. It was like an amazing thing for me. मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि whether I'm really whether I can express myself and make people understand कि मैं क्या करना चाहती हूँ। And post that वो सिलसिला जारी रहा। I did work in Jaipur. I did the International Horticulture Innovation Training Center for Jaipur. वहां से लेके रायपुर में there was a deer park that was coming, so we had done some presentation. हाल ही में मैंने बायोडाइवर्सिटी पार्क पे काफी काम किया हुआ है। जो एशिया की सबसे लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल फैक्ट्री है महिंद्रा, उसका पूरा मास्टर प्लानिंग 678 एकर्स, और आज तक मैं उनके साथ जुड़ी हुई हूँ। तो धीरे धीरे मुझे ऐसे लगा कि वाई एम आई डिफरेंट, मे बी बिकॉज आई डोंट ओनली टॉक अबाउट ब्रिक एंड मॉर्टार, because I am very emotionally connected to my landscapes. I try to give a very experiential feeling. मतलब मुझे लगता है कि हम जो भी क्रिएट करते हैं, स्पेशली पब्लिक स्पेसेस, अगर वहां पे ओनरशिप जनरेट करनी है आपको, तो द पीपल शुड लाइक दैट प्लेस, इट शुड एड अ फंक्शनल वैल्यू। एक जो बायोफिलिक वैल्यू, उसको बायोफिलिक मतलब जो बायोस्फीयर से कनेक्टेड हो, एनवायरमेंट से कनेक्टेड हो, एंड एट द सेम टाइम जो आदमी यूज करेगा उसके लिए फंक्शन हो। तो कई बार हमारे पास स्कूल्स आते हैं, कॉलेजेस आते हैं, तो वहां पे कुछ अलग करना पड़ता है, क्योंकि वहां अलग टाइप के लोग होते हैं। अगर पब्लिक लैंडस्केप करते तो कुछ अलग टाइप के लोग होते हैं। तो आज मैं करीबन 16 सिटीज में काम कर रही हूँ। हाल ही में शायद एक अष्टभुजी या मतलब त्रिवेंद्रम के पास एक जगह है, शायद ही वो काम मिल जाए, पता नहीं। बट दैट विल बी अनदर सिटी टू माय थिंग। बट अच्छा लग रहा है, अच्छे काम कर रही हूँ एंड फील्स गुड। बिल्कुल नहीं, डेफिनेटली आपको जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो वो आपको मिल जाएगा। एंड वी आर विशिंग यू गुड लक फॉर दैट डॉक्टर। सो डॉक्टर, वी वांट टू नो मोर अबाउट योर लार्जर गोल और विजन एज फार एज जो ग्रीन इनिशिएटिव्स है, जो आप ग्रीन प्रोजेक्ट्स कर रहे हो, उसको लेके व्हाट इज योर लार्जर गोल और विजन? तो बेसिकली व्हाट आई फील इज, आज जिस तरह से प्रोग्रेस हो रहा है वर्ल्ड में, इनिशियली शायद जो हम काम करते थे भी ourselves didn't know कि हम क्या इम्पैक्ट कर रहे हैं, बट आज हम वो इम्पैक्ट महसूस कर रहे हैं। जो लैंडस्केप हमने 10-12 साल पहले किए हैं, वहां का आज एनवायरमेंट अलग है, टेम्परेचर हैज डिक्रीज, वाटर कंटेंट रिटेंशन हैज इंक्रीज। सो जैसे जैसे हम प्रोग्रेस कर रहे हैं, हमें पता चल रहा है दैट द वर्ल्ड इज नाउ गेटिंग कॉन्शियस कि नेचुरल रिसोर्सेज आर गेटिंग लेस। एंड if when we say कि हम sustainability के पास जा रहे हैं, so what does that mean? So it's very simple. We are looking at utilizing today's needs, fulfilling today's needs by not compromising on tomorrow's future goals या future resources. तो जब मैं कहती हूँ कि मैंने एक जगह बनाई है जिसका मैंने एक एम्बिएंट एनवायरनमेंट क्रिएट किया है, इसका मतलब ये है कि आज जो भी यूजर है उसकी तो नीड सेटिस्फाई हो गई, बट शायद कल के कई सारे जनरेशंस को भी वो रिसोर्सेज का यूज मिलेगा। वी आर नॉट डिप्लॉइंग डिप्लीटिंग दोज रिसोर्सेज। तो बेसिकली मुझे लगता है कि हर एक छोटी सी चीजें हैं, जैसे हम सुबह उठ के दांत ब्रश करते हैं, हम बचपन से सीखे हैं। तो अगर हम आज बच्चों को पहले से इसके बारे में बताएं
जैसे एनवायरमेंट एजुकेशन को अगर आज हम कंपलसरी करें, या हर एक स्कूल ये सोचे कि हाँ हमें बच्चों को कुछ ना कुछ इस बारे में बताना है, तो छोटी सी चीज जैसे इलेक्ट्रिसिटी को सेव करना है या पानी को सेव करना है या परमिएबल सर्फेसेस बनाना है, बहुत इरोजन नहीं करना, कि छोटी छोटी चीजें बच्चे वहीं से सीख लेंगी। और जैसे हम बड़े हो जाएंगे हम ज्यादा रिस्पॉन्सिबल बनेंगे, और हमारे कोई भी फील्ड हो, चाहे या मैन्युफैक्चरिंग, तो हम कॉस्ट एफिशिएंट कैसे कर सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग में, किस तरह का हम डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ला सकते हैं, हाउ वी कैन यूज द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी in increasing the energy efficiency of a building. All these things can be put up together, and I think that is जहाँ पे शायद थोड़ा सा गवर्नेंस भी करना पड़ेगा, so some laws would have, regulations would have to be brought, but अगर हम इस तरह की डेवलपमेंट करेंगे, so I think the world will definitely be a better place to live. आज ही हम जब बोलते हैं कि अरे suddenly the temperature has increased, या हम कहते हैं कि एक जमाने बम्बई में प्री मानसून शॉवर्स मई में होते थे, अभी होते ही नहीं, जून के बाद आती है बारिश। तो दिस चेंज इज बिकॉज वी हैव डन समथिंग टू दिस क्लाइमेट, वी आर रिस्पॉन्सिबल। और अगर हम ये जान लेते हैं आज, तो आई एम श्योर विद द काइंड ऑफ प्रेशर दैट दिस अर्थ इज गोइंग टू हैव, हम हर एक जन का छोटा सा कंट्रीब्यूशन भी बहुत बड़ा काम कर जाए। बिल्कुल नहीं, आपने काफ़ी सारी चीज़ें बताई डॉक्टर। तो उसमें से एक एक मेरा सवाल ये है कि जिस तरीके से दी सस्टेनेबिलिटी और ग्रीन को प्रमोट करते हैं लोग, है ना, तो और मतलब एक 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 पॉइंट से ये बजवर्ड बन गया है आज के टाइम पे, एक ट्रेंडिंग वर्ड बन गया है कि सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं लोग, ग्रीन की बात करते हैं, और काफ़ी सारे बिजनेसेस जो है उनको वो सिर्फ एक कॉन्सेप्ट से ही दे आर ट्राइंग टू सेल। तो व्हाट आर योर व्यूज अबाउट इट? क्या ये प्रैक्टिकल है, या मतलब सही में जितना जो लोग बात करते हैं, जितना हम सुनते हैं डेली लाइफ में, तो इतना प्रैक्टिकली काम हो रहा है या नहीं हो रहा है? व्हाट आर योर व्यूज? Personally, I feel that I have two takes on this. It is a very beautiful jargon to say that I am sustainable. Yeah, we are practicing sustainable initiatives. Having said that, there are a lot of people who are really turning towards sustainability. People who are looking at upcycling, recycling stuff, whether it is clothes, whether it is plastic से fuel बन रहा है आज. People who are understanding that you can reuse and recycle. People who are making the workplace very ergonomic, who are empowering people by giving them skill sets, so that the world becomes better. Because basically when we are talking कि हमें sustainability करना है, तो हमें क्या करना है? हमें ये देखना है कि हम हमारा बिजनेस वैल्यू और हमारा सोशल वैल्यू कैसे बढ़ाएं। तो सोशल वैल्यू अगर हमें बढ़ाना है तो हमें क्या करना चाहिए? तो द वर्ल्ड शुड बी अ बेटर प्लेस टू लिव, राइट? और बिजनेस वैल्यू अगर हमें बढ़ाना है तो व्हाट इज इट दैट वी आर डूइंग? तो हाउ वी विल इंटीग्रेट दीज टू थिंग्स? तो मुझे ऐसे लगता है कि काफी लोग आगे आ रहे हैं, एंड काफी लोगों को ये बात समझ में आज, स्पेशली अगर आप जेनजी को देखिए जो अपना नेक्स्ट जनरेशन है, दे डोंट थिंक लाइक अस एट ऑल, दे आर ऑलरेडी इम्प्लीमेंटिंग दिस। मतलब बच्चे हैं जो कहते हैं कि मुझे प्लास्टिक नहीं चाहिए, आई डोंट वांट टू कवर माय बुक्स विद प्लास्टिक। बच्चे हैं जो कहते हैं कि यूज बोथ साइड्स ऑफ द पेपर, तो ऐसा नहीं कि दिस रिवोल्यूशन इज नॉट कमिंग। एक जमाना था जब हम ऐसे ही कुछ भी पेपर कुछ भी पोल्यूशन करते थे, चलते हुए रिक्शा में से हम पैकेट ड्रॉप करते। आज हमारे बच्चे नहीं करते, दे आर वेरी पर्टिकुलर, दे थ्रो इट नियर डस्टबिन। तो छोटी छोटी चीजें आ रही है, छोटी सी चीजें, यूनिवर्सल एक्सेसिबिलिटी, मतलब जहां पे हर एक जन, वेदर इट इज ऑन अ स्ट्रोलर और ऑन अ साइकिल, ही कैन रीच देयर। ये शायद कॉन्सेप्ट पहले नहीं था, लेकिन आज फैक्ट्रीज, रेसिडेंसेस, कॉर्पोरेट ऑफिसेज, गवर्नमेंट ऑफिसेज, everybody is looking at gender equality, everybody is looking at giving that thing. तो मुझे लगता है कि though this is a huge jargon, and though people are maybe not rightfully using it at all the times, there are a lot of people using it and practicing it. और अगर सच में अगर आपके जैसे लोग try to really promote it in the right way, I think वो दिन दूर नहीं रहेगा जब हमारा जनरेशन नेक्स्ट इज गोइंग टू बी मोर अवेयर, मोर इको कॉन्शियस, एंड आई थिंक वर्ल्ड विल बी अ हैप्पियर प्लेस।
थैंक यू सो मच डॉक्टर। आपने मेरे ख्याल से यू हैव हाईलाइटेड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स जहाँ पे ये पर्टिकुलर एक अवेयरनेस की और ज़रूरत है वर्ल्ड को बेटर बनाने के लिए। एंड वी हैव डिस्कस अबाउट द सस्टेनेबिलिटी एंड अबाउट योर वेंचर। सो डॉक्टर, आई हैव अ फ्यू क्वेश्चंस अबाउट योर पर्सनल लाइफ नाउ, एंड इफ यू अलाउ आई वांट टू आस्क यू 2 3 थिंग्स। Sure, please go ahead. Thank you so much. So, Doctor, personally, when it comes to your personality, right? So, what are the 3 traits that best describe you? ऐसी 3 personality traits आपकी जो आपको define करते हो, आपको describe करते हो। Uh, oh my goodness. This is out of the blue. So, first thing I think is I think leadership, because I have Okay. always been a leader in whatever I've been doing. Um, I think creativity, because whatever I do, whether it is cooking food or creating a project, I'm very creative. So, and I believe every person needs creativity, because creativity can be expressed in any form, whether it is a language, whether it is a drawing, whether it is a sculpture, or whether it is a talk. So that's my second thing. And I think the third thing is trustworthy, because I have a lot of friends, and I think it becomes very easy for them to come and speak to me. And I think I have a very good emotional connect with them, and they trust me for little things, which I think is Superb. So, important. Dr. Asim is equal to leadership plus creativity plus approachable or trustworthy. So, thank you so much for this particular very unique definition of yours, Doctor. And so, Doctor, मेरा अगला सवाल है आपको कि जब आप काम नहीं करते हो, when you are not in office, तो what are the other activities which you are doing? और क्या क्या activities करते हो? Uh, to be very frank, ऐसा आजकल में होने लगा है कि मैं काम नहीं करती हूँ, बिकॉज आई थिंक एज यू मैच्योर एंड यू रियलाइज व्हाट बिजनेस इज, you understand your roles and responsibilities, you become very effective and efficient in what you're doing. But I think one of the best things that we do in our families, we go on long road trips, because I think the best of India can be seen by a road trip only. And my kids are small, so it's great taking them around and showing them that this world is so beautiful, and they learn a lot of things. जो चीजें शायद हम बैठे बैठे डाइनिंग टेबल पे डिस्कस नहीं करते, बट रोड ट्रिप पे हम कई सारी चीजें हैं जो उनकी क्यूरियस माइंड्स पूछती रहती हैं. And I think India is a very beautiful place. Every state is very different. So you can see the transformation of different, when you're going by roads, different cultures, different languages, different food. And I think you're teaching your children to be resilient and accept the change. And, that is one thing that we love. I paint. I like to paint. I like to sing. Once upon a time, I was an ardent biker, but right now, so I think I like to do. I spend a lot of time sometimes in my garden, or reading something. I'm basically, I love kids, so I like to spend a lot of time with my kids and their friends. सुपर। सो मेरा अगला सवाल है आपको, आपने जो भी बताया उसमें इसके अलावा एक सवाल है कि एज अ लीडर, एज अ वुमन एंटरप्रेन्योर, आई एम श्योर you must be focusing on your personality development or the skill improvement. तो विच इज़ वन थिंग जो आप एक पर्टिकुलर स्किल हो या कुछ भी जो आप इम्प्रूव कर रहे हो और उसके बारे में आप सीख रहे हो? um, I think as a woman entrepreneur, it is very important, and especially when you are heading your organization, you must understand कि सबसे important चीज जो आप कर रहे हो is you are able to allow so many families are dependent on you. Okay, because whatever organization you have, whether you have 8 or 10 employees or you have 100 employees, okay, you are they look up at you. उनके घर का चूल्हा आपके कारण चल रहा है. So it's a very big responsibility.
you cannot take it lightly. और उसके लिए you have to develop yourself, you have to know what is going on in the world, you know, and how you can help them. Even that is very important. क्योंकि ये सारे लोगों को शायद money is not the only thing that they are looking at. They come with you with so much of trust and so much of love. You need to be able to be that one cushion or their sound box, you know. तो मुझे लगता है मैं जो मेरा टाइम स्पेंड कर रही हूँ, आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि व्हाट्स गोइंग ऑन इन द वर्ल्ड, how I can come back and give this information to my people, my team, how I can upgrade their skills, and how I can make them enjoy life. Because if they enjoy life, then I will also really enjoy life. So my purpose is to create a very happy environment. And people think I'm really mad because sometimes we just have silly chocolate parties or painting parties in the office. But I think it is very, very important to be very connected to people and build great relationships, because they will help you to grow as an individual. So right now I'm concentrating on those aspects and trying to build a better organization. Super. And Doctor, so how do you consider yourself, a hardworking person or a smart person? I think initially I was hardworking, but recently I've become smart working. All right. So yeah. Yeah, please go ahead. आप कुछ कह रहे थे. So recently I've been selected for this Goldman Sachs 10,000 Women Entrepreneur Program. In fact, right now I'm in Bangalore. I've been trained at IIM Bangalore, and it is wonderful to learn, unlearn a few things, and I think the very fact that I'm empowering myself is going to help me empower others. And I personally feel that empowered women can empower women. And a lot of women really need to come out, to step out, to work. You know, I worked in a man's world. We were just two girls in our entire college because nobody wanted to do horticulture or agriculture. Right? I drove a bike and there were hardly anybody. I had a transport license because I used to live on a farm and I used to drive a truck. I had to get a transport license. So I ventured into a field जो बहुत tough था, बहुत difficult था, you know. But I realized that there are a lot of people, a lot of girls today doing that. And I think they have this beautiful EQ, which is maybe helping them to be better managers, and they can really make a big difference. So that is what I feel. सुपर डॉक्टर. सो डॉक्टर, अगला सवाल है मेरा. आपके जो पूरा आपका जर्नी रहा है, वो जर्नी में व्हाट वाज द मोस्ट चैलेंजिंग पार्ट एंड हाउ डिड यू ओवरकम फ्रॉम दैट पर्टिकुलर चैलेंज? Okay, one of the most challenging part was itself getting into this field, because like I said, this was not ventured by any women at that time. There were a lot of hardships. Let me tell you, when I was working on one of my largest projects of 678 acres, they had a policy of, there were no women laborers because there can be dangers, there can be accidents, you know, when there are men working on that large scale. They never realized that the principal consultant was a lady. So there were no toilet facilities. But the minute they realized, you know, they said, Aseem, this is for you. Okay. So, I mean, you know, I'm just giving you an example that when you work in such hardships, there are some things that you never expect. These things also happen, or these things can also come. So like when I went for the RTO officer wanted to know why I wanted a transport license. And I told him I live on a farm. And I drive 207, which is a transport vehicle. So I need a license. Otherwise, who will drive for me? Though we were not rich to have a driver at that time. So, you know, I mean, I realized that the most difficult thing was to dwell in a man's world and still have your own voice, because it is not easy. It is definitely not easy, but you learn to be hard, you learn to be harsh. I think once you are done that, once you are very confident about yourself, and there are people who also support you, not that everybody is bad. You know, my strongest motivating force is my husband and my dad, my family, who has always stood by me and made me feel that you can do everything and anything. So I think that with that kind of a support, you can overcome anything. But basically,
these are one incident that really pivoted me entirely and shattered me to some extent, and I had to really fight back and come back was, when I was working in this hard at Adivasi area and trying to do some difference to the world with no money in my pocket. I suffered an ectopic pregnancy and I almost came back from death. And the doctor said that, Aseem, it's very difficult for you to have a baby again. And that was the time, because like I said, I love kids. So that was the time when I was like, oh my goodness, what am I doing? Because there was so much of stress and hardships. And you are like ready to give anything because you have a purpose in life, right? I came back and I always believe that if you're good and if you want something, like you say, कि अगर आप कोई शिद्दत से मांगो तो पूरी कायनात आपको वो चीज जरूर देगी. So I have 2 kids. I never went for any fertilization aids, but I have a girl and I have a boy. That's what they're doing very well, and things just happen in your life. So all you need to do is you need to be good in life. अगर आप अच्छे हो तो आपके साथ अच्छा ही होगा, कोई कुछ नहीं कर सकता. I think that is one thing that has made me much. So you are so strong, doctor, and let me tell you that. So you came from a very tough challenge that you have mentioned right now. Okay, so now my last question to you is: do you think you are successful? And if your answer is yes, then according to you, what is success? Successful is a very it's very difficult to define success, because for some people success may be money, and success never stops there. Success is like something that you keep on climbing on. But I think if you're happy in the space that you are, if you are able to impact even one life, what matters in this world is whose story you are in. And if you can do that, if you are in somebody's story and somebody thinks about you, then you are successful. So I think I am successful in that respect. Yeah. Very, very, the cool definition you have given. I think, it is very inspiring, and I'm sure it will inspire to a lot of other people also. And it was great talking to you, doctor. And thank you so much for, your participation to Greenpreneur Convention and Awards. And thank you so much for taking out your time, especially when you are traveling and you are in Bangalore, and still you are with us live as of now. So thank you so much for that, doctor. Thank you so much. It's been a pleasure coming here, and I'm so glad that you people are making a difference by doing some event like this. And all the best to you, and may God bless you. Thank you so much. Thank you so much. So thank you so much, everyone, for watching out this particular talk show, which is India's first green talk show, named as AGROTIS Presents Talk with Greenpreneur. And as you know, हम लोग green entrepreneurs से बात करते हैं. We are trying to find out their experience, their journey, challenges, their success, so many things about this particular the entrepreneurship ecosystem. So thank you so much for watching out this particular show, and looking forward to see you tomorrow again at the same time. Stay tuned, keep watching Vyapaar Jagat TV, and if you have not subscribed Vyapaar Jagat TV yet, so please do subscribe Vyapaar Jagat TV, and वो बेल आइकन दबाना मत भूलना, because that is the one which will give you notification whenever we have new story on this particular channel. Thank you so much. सपना देखें हम उसे पूरा करें, कोई उड़ना चाहे हम उसे विश्वास दे, कोई सपना देखें हम उसे पूरा करें, कोई उड़ना चाहे हम उसे विश्वास दे, जोश भरने को तैयार हम, आगे बढ़ने में
राहदार हम, जोश भरने को तैयार हम, आगे बढ़ने में राहदार हम। मेरा व्यापार मेरी पहचान, मेरा व्यापार मेरी पहचान, मेरा व्यापार मेरी पहचान, मेरा व्यापार मेरी पहचान, हर व्यापार को दे पहचान। हर व्यापार को दे पहचान, व्यापार